So it will be called as octadecanoic acid, or oleic acid is their trivial name. So nomenclature of the fatty acid, once again, fatty acids, as I said, that these are the hydrocarbons having the carboxylate group as a functional group, and their carbon number range from 4 to 36. इनमें से कुछ फैट्स बनाते हैं, यानी सिंपल फैट्स बनाते हैं, कुछ वैक्सेस बनाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में इन्वॉल्व हैं. सो इन टर्म्स ऑफ द नोटेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैटी एसिड्स हैं और उनमें डबल बॉन्ड नहीं है, या फैटी एसिड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, तो इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग उनको किस तरह डिजिग्नेट किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल, if there is a 16 carbon saturated fatty acid, for example, जिसको generally हम palmitic acid बोलते हैं, palmitic acid is a 16 carbon saturated fatty acid, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उसको किस तरह लिखा जाता है, 16 full colon 0. So 16 designate the number of the carbon atom, full colon and 0 designate that there is no double bond. Similarly, if there is an 18 carbon oleic acid, 18 carbon fatty acid with no double bond, और then it will be regarded as 18 full colon 0. लेकिन अगर 18 कार्बन और सिंगल डबल बॉन्ड है, वन डबल बॉन्ड, so they will be written as 18 full colon 1. Then the next thing is the designation of their double bond, कि डबल बॉन्ड आखिर प्रेजेंट कहाँ पे है, किन किन कार्बन्स के दरमियान प्रेजेंट है. तो हाँ, जनरली फैटी एसिड का जो फर्स्ट कार्बन है, द नियरेस्ट कार्बन वेयर द डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, उसको डिजिग्नेट किया जाता है बाय राइटिंग द सेमीकोलन, या जनरली डेल्टा का साइन और डेल्टा के साइन के ऊपर कार्बन नंबर लिखते हैं, तो नियरेस्ट कार्बन नंबर है वो लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, द पोजीशन ऑफ एनी डबल बॉन्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय सुपरस्क्रिप्ट नंबर फॉलोइंग द डेल्टा. फॉर एग्जांपल, 20 कार्बन फैटी एसिड विद वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 9 and 10. अब इसको यूँ लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल, there are one double bond between carbon 9 and 10 and the other double bond between carbon 12 and 13. तो उसको कुछ यूँ लिखा जाएगा कि 20 full colon 2, then bracket भी हो सकता है और डेल्टा का साइन भी हो सकता है, डेल्टा के साइन के सुपरस्क्रिप्ट में 9, 12. So 20 designate the number of the carbon atom present in the total number of the carbon present in the fatty acid. Here is a 20 carbon fatty acid, for example, or full colon 2 designate the number of total double bonds present within the fatty acid. दो डबल बॉन्ड्स हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक डबल बॉन्ड है 9 और 10 के दरमियान, सो 9 लिखा जाएगा, और दूसरा है 12 और 13 के दरमियान, तो 12 लिखा जाएगा. So these are the few examples of the saturated fatty acid with no double bond, और इनके generic name और इनके sources. For example, acetic acid has 2 carbon. Generally fatty acids start from the 4 carbon. So butyric acid have 4 carbon. Generally they exist in a small amount in the fats. 5 carbon valeric acid है 6 carbon, caproic acid है 12 carbon, lauric acid है, myristic acid 14 carbon है, palmitic acid 16 carbon, stearic acid 18 carbon. So 18 carbon stearic acid with no double bond. और ये इनके different sources where they occur actually. Unsaturated fatty acid containing one or more double bonds, for example monoenoic acid or mono unsaturated fatty acid में single double bond हो, for example 16, 1 and 9 means कि 16 carbon compound, इसको generally palmitoic acid बोलते हैं. So 16 carbon fatty acid with single double bond, and that double bond is present between carbon 9 and 10. Monoenoic acid की another example is the 18 carbon oleic acid. So oleic acid containing the 18 carbon fatty acid with single double bond, and that double bond is present between carbon 9 and 10. Dienoic acid having 2 double bond, इनमें 18 carbon compound जिसको linoleic acid बोलते हैं. So 18 carbon with no double bond are called as the stearic acid. 18 carbon with one double bond are called as the oleic acid. 18 carbon with 2 double bond are called as the linoleic acid, while 18 carbon with 3 double bond are called as the linolenic acid. फिर इनमें दो examples हैं based on the position of the double bond, gamma linolenic and the alpha linolenic.
So, for example, linoleic acid has 18 carbon, two double bond. First double bond is present between carbon 9 and 10, the other is present between 12 and 13. So, nearest or the first carbon atom will be written. Linoleic acid has 18, total number of the carbon in the fatty acid 3 double bonds, then semicolon 6 comma 6 comma 6 comma 9 comma 12. In एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 6 एंड 7 के दरमियान, दूसरा डबल बॉन्ड बिटवीन 9 एंड 10 के दरमियान, और थर्ड बिटवीन कार्बन 12 एंड 13 के दरमियान प्रेजेंट होता है. Then the physical and the physiologic properties of the fatty acids. इनकी फैटी एसिड्स की या फैट्स की या लिपिड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, दे टोटली डिपेंड्स ऑन द चेन लेंथ एंड द डिग्री ऑफ द अनसेचुरेशन. इन दो फैक्टर्स पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट है, तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैटी एसिड और द लिपिड्स कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर फैटी एसिड इट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द चेन लेंथ. जितनी चेन लेंथ ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा, यानी उतना ये सॉलिड फॉर्म में होगा. और while the degree of saturation decreases the melting point. For example, कोई फैटी एसिड्स हैं, वो अगर उनमें सिंगल डबल बॉन्ड है, तो वो कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. लेकिन ऐसे फैटी एसिड जिनमें दो डबल बॉन्ड होंगे, तो दो डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड में मेल्टिंग पॉइंट फर्दर भी कम होगा. So as we increases the degree of the unsaturation in double bond, जितने इंक्रीज होते जाएंगे उतनी उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी, यानी फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड फॉर्म में चेंज होती जाएगी. दैट्स वाई जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बिकॉज दे कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. और जो ऑयल्स होते हैं, दे कंटेन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. So that's why क्योंकि unsaturated fatty acid में melting point in low temperature पे maintain हो जाता है, achieve हो जाता है. That's why physical state में they exist as a liquid form. Function of the lipid, there are varieties of the function of the lipids. For example, they act as इनका जो chief function है वो है energy source का. They are the richest energy source compared to the carbohydrate and the proteins. Single gram, 1 gram of the lipid they produces 9 kilocalorie energy. जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 gram they produce 4 kilocalorie of energy. So compared to the other biomolecule, they are the richest energy source. The other important thing that they constitute the membrane, जो कि life का एक important unit है. Life starting membrane से होती है, and that membrane is composed of the lipid bilayers. इंसोलेशन, बिकॉज इंसोलेशन की वजह से ये हीट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, शॉक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो लिपिड की लेयर्स होती हैं, दे बेसिकली प्रोटेक्ट दैट ऑर्गन फ्रॉम द शॉक. व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट दे प्रिवेंट इट फ्रॉम द ड्राइंग. इसके अलावा लिपिड जो हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द हार्मोन, दे कॉन्स्टिट्यूट द हार्मोन्स. लिपिड्स चूँकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, they do not interact with the water, so that's why they make a partitions between the aqueous and they are the richest energy source. Role of the lipid, different types of the lipids, उनके जो roles हैं, for example triglycerides हैं, they are the main storage form of the fatty acid. और generally जो fats हैं, ये human body में adipose tissue के अंदर store होते हैं. Phospholipids, they are the constituent of the cell membrane. Phosphatidylcholines, इनको generally lecithins बोलते हैं, they also occur in the cell membrane, or generally of the cell membrane of the brain cells. Phosphatidylinositol is a precursor of the second messenger. Cardiolipin is a major lipid of the mitochondrial membrane. Plasminogen occurs in the brain and the muscle. Sphingomyelin are found in the nervous system. Ergosterol is a precursor of the vitamin D. So these are the different roles of the different lipids. And the last is the digestion and absorption of the lipid. जो lipids हम diet में लेते हैं, जो generally composed होता है 95% of the triglycerides, and it also contains the cholesterol esters, phospholipid, unacidified fatty acid means the free fatty acid. तो ड्यूरिंग द डाइजेशन ये डाइजेस्ट कैसे होता है, कहाँ पे इनकी डाइजेशन होती है अलॉन्ग द डाइजेस्टिव सिस्टम, और एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं.
तो जनरली जो डाइट में हम लिपिड्स लेते हैं उनका या एनिमल सोर्स होता है या प्लांट सोर्स होता है, यानी वेजिटेबल सोर्स। तो प्लांट सोर्स की जनरल एग्जांपल्स हैं वो मीट है, बटर है, घी है, फिश है, एग्स हैं, एक्सेट्रा। और वेजिटेबल में फॉर एग्जांपल नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, कुकिंग ऑयल हैं डिफरेंट टाइप्स के, सनफ्लावर हैं, मस्टर्ड ऑयल्स हैं, फैट्स हैं। So these are the different sources of the dietary lipids.